Today is my presentation topic name is diabetes. My name is Asif Nawaz. Registration number MLT 120 2013. MLT 8th semester. Definition of diabetes: a metabolic disease in which the body inability to produce any इंसुलिन causes elevated level of glucose in the blood। ये हमारे पास मेटाबॉलिक डिजीज़ है। जब हमारे पास इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम पड़ जाए तब डायबिटीज़ काज करता है। टाइप ऑफ डायबिटीज़: टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़। टाइप 1 diabetes, also known as juvenile diabetes, usually diagnosed in children and young adult। यह आमतौर पर चिल्ड्रन और यंग स्टेज में पाया जाता है। When body own immune system destroy the insulin producing cell of the pancreas, beta cell which produce insulin। जब बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम पेंक्रियास में इस सेल को डिस्ट्रॉय करे, बीटा सेल को, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। ओनली 5% ऑफ पीपल हैव दिस डिजीज़। इससे 5% लोग मुतासिर है। बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। हमारे पास बॉडी जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, नो प्राइमरी इंटरवेंशन। काज किस वजह से काज हो सकते हैं? जेनेटिकली भी हो सकते हैं एंड समथिंग, वेदर हो गया, वायरस हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर, इसकी वजह से ये डिजीज़ काज हो सकती है। सिम्टम ऑफ डायबिटीज़: एक्सेसिव थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, इंक्रीज यूरिनेशन, ज़्यादा पेशाब आना, अनयूजुअल वेट लॉस और गेन, मोटापा हो गया, फिटीगो, दर्द, नाजिया। इन वुमेन फ्रीक्वेंट विजाइनल इन्फेक्शन, फीमेल का जो वेजाइना एरिया है इसमें ये डिजीज़ काज करते हैं। इन मेन एंड वुमेन ईस्ट इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग सोर्स। टाइप 2 डायबिटीज़, मोस्ट कॉमन फ्रॉम ऑफ डायबिटीज़, अबाउट 90% ऑफ केसेस। ये मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़, ये मोस्ट कॉमन है, तकरीबन 90% लोगों में ये पाया जाता है। यूज टू बी कॉल्ड एडल्ट ऑनसेट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन बट डज नॉट यूज इट प्रॉपरली। बॉडी जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बट वो प्रॉपरली काम नहीं करता। ग्लूकोज डज नॉट मूव इनटू सेल, दे पिल इन द ब्लड स्ट्रीम। बॉडी जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो सेल में मूव नहीं करता और ये ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर इसके क्या है? जेनेटिक्स हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इर्रेगुलर मेंसेस हो गया, रेस, ये अफ्रीका हो गया, अमेरिकन और एशिया कंट्री इसमें पाए जाते हैं। एज आफ्टर 45 बट इंक्रीजेस इन यंगर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, इनएक्टिविटी हो गई और वेट गेन हो गया। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस, जिसको हम शॉर्टली GDM भी कहते हैं। हैविंग डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान ये काज हो सकता है। फैमिली एचेक्स ऑफ डायबिटीज़, ओवरवेट टू प्रेगनेंसी। हैविंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ पुट you at risk for diabetes type 2. Giving birth to a baby, 18 out of every 100 pregnant female will develop GDM, gestational diabetes mellitus। Complication of for uncontrolled diabetes, वो डायबिटीज़ जो जिसका कंट्रोल करना वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायबिटीज़: wound and foot that won't heal leading to heart disease हो गई, damage blood vessels and retina which can cause blindness हो गया, किडनी फेलियर हो गया। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जिसमें हमारे पास ब्लाइंडनेस हो गया, किडनी डिजीज़ हो गई, नर्व डैमेज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, हार्ट अटैक
हो गया। हाउ टू मॉनिटर योर डायबिटीज। डायबिटीज को किस तरह आपने मॉनिटर करना है, चेक करना है। अ ब्लड सैंपल इज टेकन एंड पुट ऑन टेस्ट स्ट्रिप। ब्लड सैंपल लेके आपने टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर पुट करना है। स्ट्रिप इज पुट इनटू ब्लड ग्लूकोज मीटर। फिर स्ट्रिप को ग्लूकोज का जो मीटर होता है इसके ऊपर पुट करना है। A logbook is a helpful aid in keeping track of blood glucose level. Blood glucose classification, fasting blood sugar level, post meal ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग जो होता है मतलब खाने से पहले नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, और खाने के बाद जो नॉर्मल लेवल है वो है हमारे पास 70 to 140 mg पर डेसीलीटर। प्री डायबिटीज जो है उसका जो नॉर्मल लेवल है मतलब उसका जो फास्टिंग लेवल वो होता है 101 to 125 mg पर डेसीलीटर। खाने के बाद प्री डायबिटीज का जो नॉर्मल लेवल जो होता है वो 141 to 200 mg पर डेसीलीटर। डायबिटीज का जो होता है 125 mg पर डेसीलीटर एंड अबव। खाना खाने के बाद 200 mg पर डेसीलीटर या इससे अबव। प्रिवेंशन इसका क्या है? टाइप 1 का नॉट प्रिवेंटेबल is of right now studies on way to possible prevent further destruction of the beta cell. मेंटेन एंड कंट्रोल शुगर लेवल, इंसुलिन इंजेक्शन। आपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है और कंट्रोल करना है, और साथ में इंसुलिन इंजेक्शन भी लगाने हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल मतलब आपने अपने हेल्थ को हेल्थी रखना है। एक्सरसाइज एंड डाइट। ट्रांसप्लांटेशन के साथ भी प्रिवेंशन पॉसिबल है। टाइप 2 का प्रिवेंशन जो है प्राइमरी मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, सेकेंडरी चेक HbA1c, एडजस्ट डाइट, एक्सरसाइज एंड ईट वेल। फूड एग्जाम। गेस्टेशनल डायबिटीज का जो प्रिवेंशन है फिजिकल एक्टिविटी। रिसर्चर फाउंड बीइंग फिजिकल एक्टिविटी बिफोर एंड आफ्टर देयर प्रेगनेंसी रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ gestational diabetes mellitus by about 70 or more. Diet. A study showed that each 10-gram increase in fiber a day reduced the risk of gestational diabetes mellitus by 26%. United States prevalence 29.1 million people have diabetes. That's about 1 out of every 11 people. United States prevalence overall number diabetes and pre-diabetes. Prevalence in 2012 29.1 million American or 9.3% of the population had diabetes. In 2010, the figure was 25.8 million and 8.3. Prevalence in senior, the percentage of American age 65 and older remain high at 25.9% or 11.8 million diagnosed and undiagnosed. New cases of diabetes and prediabetes. The incidence of diabetes in 2012 was 1.7 million new diagnoses year, and
2010 it was 1.9 million. Pre-diabetes in 2012, 86 million American which age 20 and older and pre-diabetes, that's up from 79 million in 2010. ऐसे कितने मौत काज हुई है? Diabetes remained the seventh leading cause of death in United States in 2000 with 69,071 death certificate listing. It is the underlying cause of death in a total of 2,34,051 death certificate listing diabetes is underlying or contributing cause of death. Figure 32.6 prevalence of diabetes in the United States 1960 to 2010. Prevalence of diabetes in Pakistan. पंजाब में 20% पाए जाते हैं, सिंध में 15, KPK और बलूचिस्तान में 10%. डायबिटीज एंड ओबेसिटी, ये उनके पिक्चर हैं. Although excess weight increase the rate of type 2 diabetes, at what remembering that most overweight people do not have diabetes and many people with type 2 are normal weight or only moderately overweight, so again it's not clear cut. Cost of diabetes in US. Total medical cost and lost work at wage of people with diagnosed diabetes. Risk of diabetes for adult with diabetes. Cost of diabetes update March 6, 2013. 245 billion total cost of diagnosed diabetes in the United States in 2012. 176 billion for direct medical cost, 69 billion and reduced productivity. After adjusting for population and 6 differences, average medical expenditure among people with diagnosed diabetes was 2.3 times higher than that expenditure would be the absence of diabetes. Global prevalence हो गया 2 plus 205 million. Pre-diabetes 86 million people, more than 1 out of 3 adults have pre-diabetes. Without weight loss and moderate physical activity, 15 to 16% of people with pre-diabetes will develop type 2 diabetes within 5 years. What can you do? You can prevent or delay type 2 diabetes. Lose weight, eat healthy, be more activity. You can manage diabetes or work with a healthy professional. Eat healthy, stay active. Thank you so much.